I'm sure that we would have been able to deal with the situation far better. This and more streaming on world's first news OTT, News 9 Plus. Download now. Hello and welcome. I'm Ravi Mishra and you're watching News 9 Live. Let's begin with the top stories of this hour. In another big development in WFI versus wrestlers saga, the recently elected body of Wrestling Federation of India has now been suspended. The suspension by the Union Sports Ministry comes just 3 days after the body was elected on December 21st. The reason cited by the Sports Ministry is that the newly elected Chief Sanjay Kumar Singh had announced conducting the under 15 and under 20 nationals for wrestling without giving sufficient notice to the participating wrestlers. In an official release, the Sports Ministry said that the announcement for the national competitions was hasty and that due process was not followed. The ministry detailed that announcement by Sanjay Singh was against the rules as the minimum of the 15 days notice was needed for the wrestlers to prepare. The Sports Ministry's statement also made a big allegation on the newly elected body, saying that the body appeared to be in complete control of former office bearers and was in complete disregard of the sports code. The statement, without naming, refers to Brij Bhushan Singh, the previous president of the Wrestling Federation of India. Brij Bhushan Singh has been accused of sexually harassing several of the female wrestlers. In view of the संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है।
मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो। तो कह रहे नियमों की अनदेखी की गई, वो उस पर क्या कहना चाहिए, इसलिए सस्पेंड किया? वो पूरी बात मैंने बता दी। सर जेपी नड्डा जी से क्या बातचीत, क्या मुलाकात हुई, क्यों गए थे मिलने आप? उन्होंने बुलाया था या आप खुद गए थे? देखिए, वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूं। लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, सरकार की ही इच्छा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ। पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है, तो ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। संजय सिंह भुइयार हैं और मैं राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंद नहीं होंगे? देखिए, यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है। इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, उनको मुबारक। देखिए, ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर, साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे? उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। WFI विरोध जो है फैसले लिए गए जो भी है, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। So no comments from Sanjay Singh on the issue. And among the most prominent voices against Brij Bhushan have been Olympic medalists Sakshi Malik and Bajrang Punia. After Sanjay Singh, who is an aide to Brij Bhushan Singh, was elected president of the WFI on December 21st, Sakshi Malik quit wrestling in protest and hung up her boots in a televised press conference. On the other hand, Bajrang Punia returned his Padma Shri award in protest as well. अभी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है क्या सिर्फ संजय सिंह निलंबित हुए हैं या पूरी फेडरेशन ही रद्द कर दी। हाँ, तो वो अभी मेरे पास ना पुख्ता सबूत नहीं है, और सिर्फ आप लोग बस दिखा रहे हो, लेकिन कुछ रिटर्न में अभी आया नहीं है। और जो भी होगा वो मैं आगे आप सबके साथ ज़रूर बात करूँगी। और रही बात दूसरी, मैंने कल रात भी ट्वीट किया था, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। जब से लेटर निकला है कि नंदी नगर कंपटीशन कराया जाएगा, तो मुझे वही सदमे में हूँ। वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नंदी नगर में कंपटीशन और लखनऊ में कैंप। तो मैं उन बच्चियों के लिए काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हूँ।
अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है, तो रद्द किया गया है। तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूँगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रही हैं, आगे क्या करेंगे? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज़ रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद ब्रिज भूषण शरण सिंह ने पीसी की और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। क्या साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगी। ब्रिज भूषण का कहना है कि मैं संजय सिंह को नहीं जानता हूं। बयान आ रहे हैं, वो आप फोटोज तो देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे। Moving on to the next story, Delhi's air quality has plunged to severe level, hitting an overall air quality index 467. Widespread areas have recorded alarming AQI level, mostly surprising 400. The government has implemented stage 3 restrictions under the graded response action plan (GRAP), attributing the sudden spike of unfavorable weather condition like fog and low wind speed, according to the Commission of Air Quality Management. The Haryana and Uttar Pradesh government are urged to consider suspending physical education classes due to declining air quality. Exemptions from the construction ban include projects related to national security and healthcare. Weather disruptions, including thick fog, have affected flight operations at IGI. The city experiences a minimum temperature of 9.6 degrees Celsius, with the Indian Meteorological Department predicting moderate fog throughout the day and a maximum temperature of around 23 degrees Celsius. Moving to the next story. Stumbled upon Money 9, my secret weapon of mastering finance and thriving in the economy. Dive into unparalleled financial wisdom with Money 9, the ultimate app to decode finance and pocket real-time cash. Grab control of your financial journey starting now. जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। Talking about COVID, India is witnessing a resurgence of COVID-19 cases coupled with concerns about the JN1 subvariant originating from the Omicron strain. The first JN1 case was reported in Kerala. The country reported 752 new cases with a spike in active cases of 3,420 as per the update by the ministry. The World Health Organization classifies JN1 as a variant of interest. INSCOG Chief Dr. N.K. Arora assures no extra vaccine does needed for JN1. The symptoms of JN1 are similar to the Omicron, and experts advise remaining alert but not panicking. The Serum Institute of India applies for a license for JN1. Let's listen into what AIIMS Director Dr. Randeep Gulerias has said on the COVID-19 variant. It is spreading more rapidly, and it is gradually becoming a dominant variant as far as COVID-19 is concerned, both in the US, in Europe,
Singapore, and we're seeing more cases in India also. So it is causing more infection, possibly because it is more transmissible and taking over the older strains. But the data also suggests that it is not causing more severe infection, it's not causing more hospitalization, and most of the symptoms are predominantly of the upper airways like fever, cough, cold, sore throat, running nose, and body aches. Sir, as of now, like COVID variant cases are also coming, flu, RSV cases are also rising. How to stay healthy in this particular season? So this is the season when you will see viral infection, respiratory viral infections becoming more. Every year we see them, whether it's influenza, now COVID, and as you said, RSV and other viral infections. So, and that happens because of the temperature, because of crowding. It's a holiday season, people travel, so they will carry the virus with them. There is crowds, and many of the crowds are indoor because of the cold weather, and that leads to the spread of infection in a number of people. So there are two issues. One has to look at the global data and what is happening in India. Globally, this subvariant of Omicron has spread quite rapidly during last few weeks. Within India, from November onwards, actually I think it is October last week and then till now in last 8 weeks, we have just seen about 22 cases. And there is no evidence that it is spreading very rapidly. As all of us are aware that most of the cases are in Goa. And this is festival time, this is vacation time, so there is a lot of crowd going to be there. So, but overall we have not seen that it has, the number of JN1 associated COVID has increased exponentially in last. And various states, including Delhi, have begun review their COVID situations. The situation prompts heightened measures to Dehradun Hospital, while Mizoram urges adherence to COVID norms. The overall global COVID cases increased by 52, prompting vigilance but not panic. The AIMS reassures people, stating there is no need to panic but to stay vigilant. Health officials in Assam and Jharkhand affirm preparedness and readiness for any surge in case. The Assam Health Department directs hospitals to gear up against the JN1 subvariant. Let's show you a mock drill conducted by Lady Harding Hospital. कोविड बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और इस वक्त मैं अगर बात करूं 640 शुक्रवार को नए मामले दर्ज किए गए और इसी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि संक्रमण की निगरानी और उसके साथ ही साथ स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अस्पतालों में आज से मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल तो किस तरह से उसका तुरंत इलाज हो सके, कैसे उसको तुरंत फटाफट ट्रीटमेंट मिले, इस वजह से देखिएगा सारा मॉक ड्रिल किया गया। पेशेंट आया सबसे पहले, यहाँ पर डॉक्टर्स उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं देखिएगा तुरंत। इस तरह के मॉक ड्रिल सारे हॉस्पिटल्स में होगी एक एक करके। इस वार्ड में जो ले जाते हैं और ये जो उसमें अंदर ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से पेशेंट का होगा। और उस तरफ देखिएगा दूसरी साइड आईसीयू वार्ड्स बने हुए हैं और इसी तरह से और भी रूम है, मैं उधर भी जाती हूँ, वहाँ पर भी पेशेंट केयर यूनिट्स जो हैं। हाँ, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार और ये दूरी रखनी। देखिए पेशेंट्स को लेकर जा रहे, अगर कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है, कोई सीरियस कंडीशन होती है तो देखिए कहाँ ले जा रहे हैं। कोविड-19 वार्ड जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे एस्टैब्लिश किया है वहीं पे पेशेंट को ले जा रहे हैं। अच्छा, देखिए कोविड वार्ड में ले जा रहे हैं। जी। पहले उसका यहाँ पर टेस्ट किया था आपने? जी, वहाँ पे इनिशियल जो असेसमेंट करके फर्स्ट एड देके अगर एडमिशन की जरूरत होती है तो फिर हम वार्ड में एक डेडिकेटेड वार्ड हमने एस्टैब्लिश किया है तो वहीं पे ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पेशेंट को फर्स्ट फ्लोर पर लेके जा रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर जाके हम ये किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा तुरंत, और वहाँ पर मैं देखूंगी। तो देखिएगा पेशेंट को लेकर हम यहाँ से तुरंत लेकर जाएंगे और ये पहले इसकी जांच की गई कि कहीं कोविड तो नहीं है। तुरंत टेस्ट के बाद जैसे ही पता चलेगा तो इसको वार्ड में लेकर जाएंगे जो कोविड वार्ड है। तो देखिएगा कोविड वार्ड में लेकर जाएंगे हम इसको अभी यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर, तो जहाँ पर कोविड वार्ड बनाया गया है। तो ये मॉक ड्रिल चल रही है दरअसल, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। हाँ
देखिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं और यहाँ से पेशेंट को निकालेंगे लिफ्ट से और फटाफट इसको यहाँ से कोविड वार्ड जो है वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो देखिएगा पेशेंट को यहाँ से लेकर जा रहे हैं लिफ्ट से और अब ये कोविड वार्ड में ले जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से कोविड वार्ड जो है इधर से ले जाएंगे, पेशेंट को ले जा रहे हैं और देखिएगा कि जल्दी ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तमाम पेशेंट बहुत सीरियस पेशेंट्स भी आते हैं तो उनको लिए तुरंत जल्दी से काम करना, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो मॉक ड्रिल में यही सब कुछ जांच परख हो रही है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पहले से सारी तैयारियां हो जाएं। को जो भी कमी अगर दिख रही है तो उसको समय रहते तुरंत उसको ठीक किया जा सके। तो देखिएगा पेशेंट लेकर जा रहे हैं वार्ड में, कोविड वार्ड है ये, और यहाँ देखिएगा पूरी टीम जो है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज भी हैं और सब फटाफट उसको लेकर वहाँ पर पेशेंट को, और ये यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर पर कोविड वार्ड बनाया गया है। देखिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल का एक एक हिस्सा दिखा सके कि क्या क्या मॉक ड्रिल में ज़रूरी होता है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर कभी पेशेंट्स अचानक से बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए फिर मैं दिखा रही हूँ ये बार बार आपको, मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार और दूरी रखें आपस में, 2 गज की दूरी जो बात की गई थी। ये देखिएगा ये डिज़ास्टर वार्ड है यहाँ पर और यहाँ पर पेशेंट को लेकर आए। देखिएगा ये कोविड वार्ड है फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ ये बेड्स आपको दिख रहे होंगे। मैम कितने बेड्स यहाँ पर हैं? 30 बेड्स हैं। हाँ 30 बेड्स हैं यहाँ पर। और ये आईसीयू बेड्स नहीं है? नहीं ये आईसीयू बेड्स नहीं है, ये वार्ड है। अच्छा हाँ। इसके बाद बाकी के बेड ये सारे, ये पूरा का पूरा 30 बेड्स जो हैं वो डिजास्टर यूनिट या कोविड वार्ड में अभी हमने कन्वर्ट कर दिए हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़े स्टेबल पेशेंट लाए जाएंगे, आईसीयू नीचे। अच्छा आईसीयू को नीचे है, जो मैंने अभी नीचे दिखाया तब वो, और ये जो है नॉर्मल कोविड वार्ड है। हाँ नॉर्मल कोविड वार्ड। तो देखिए पेशेंट यहीं पर एडमिट होगा, तुरंत आएगा तो, और यहाँ देखिएगा ये पेशेंट को एडमिट कर दिया गया। तो ये सारी प्रोसेस होगी जो कि देखिए डॉक्टर सब देख रहे हैं। तो यही एक एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, इसलिए जितना कम समय में पेशेंट को एडमिट किया जाएगा उसका इलाज भी उतनी ही जल्दी हो पाएगा। The agitation for the Maratha Reservation is once again on the boil. Yes, Maratha Quota activist Manoj Jarange has announced that he will start an indefinite strike at Azad Maidan in Mumbai from January 22, intensify his demand for the community's reservation. Addressing a massive rally in the Bid district in the Marathwada region, Jarange claimed that the crores of people from Maratha community will come to Mumbai on January 20. Meanwhile, Chief Minister Eknath Shinde in a video message said that the Supreme Court has accepted the curative petition filed by the state government pertaining to the Maratha Reservation issue. Shinde also informed that the Supreme Court had scheduled a hearing on matter on January 24 and has quote-unquote opened a window of hope for the Maratha community. सबसे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की भावना को उन्होंने ध्यान में रखते हुए क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकृत किया है और 24 जनवरी को खुले कोर्ट में उसकी सुनवाई रखी है। ये मराठा समाज के लिए बहुत ही दिलासादायक बात है। उनको जो आरक्षण मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक बैकवर्डनेस उनका जो सिद्ध करना है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी एडवोकेट की टीम जो है ये पूरी ताकत से 24 जनवरी को कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करेगी और पूरी तरह मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ये साबित करने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत करेगी। क्योंकि इसलिए बैकवर्ड कमीशन का गठन भी हमारी सरकार ने किया है। एम्पिरिकल डेटा जो है लार्ज स्केल पर वो गठित करने का, कलेक्ट करने का काम भी हमारी बैकवर्ड कमीशन है वो कर रहा है। हमने उनको भी विनती की है जल्द से जल्द
ये एम्पिरिकल डेटा और रिपोर्ट सरकार को सादर करे और निश्चित रूप से इसका भी फायदा 24 जनवरी को हियरिंग में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि पिछले समय में जब मराठा समाज का आरक्षण रद्द करते समय जो त्रुटियां, जो खामियां, जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने रखे थे, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह ये मराठा समाज कैसे रहता है, उसकी क्या हालत है और मराठा समाज सोशली, एजुकेशनली कैसा बैकवर्ड है, ये साबित करने के लिए हमारी टीम काम करेगी। और निश्चित रूप से अब मुझे पूरा विश्वास है कि मराठा समाज को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है, मराठा समाज को आरक्षण देते हुए अन्य समाज के ऊपर अन्याय ना हो, इसे भी ध्यान रखते हुए हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है। और अभी ये भी मैं कहूंगा कि जरांगे पाटिल जी को आंदोलन करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है। जो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो लाइव हो चुकी है और इससे मराठा समाज को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारे सबकी जिम्मेदारी है और यहाँ पर शांतता और सुव्यवस्था रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए सभी का मकसद एक है, मराठा समाज को आरक्षण देना। तो इसलिए सरकार पूरी तरह मेहनत कर रही है, सरकार पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए सरकार पर विश्वास रखना ये भी जरूरी है और इसलिए सभी लोगों ने संयम रखना, संयम बरतना जरूरी है। इतना ही आह्वान, विनती मैं आज के इस उपलक्ष्य में करता हूँ। And news from the Jammu and Kashmir region, security forces have successfully intercepted a potential dangerous situation near the line of control in Akhnur sector. According to the latest report from Jammu and Kashmir police, a significant recovery of arms and ammunition has taken place. In a proactive operation, security personnel have retrieved a package dropped from a drone in Akhnur sector. The contents of this package are alarming. Authorities have discovered 6 improvised explosive devices and 1 grenade. This incident underscores the persistent threat and challenges faced by security forces in the volatile region. The recovery highlights the involving tactics employed by those sneaking to disturb peace in the area. The utilization of drones to transport and deliver such hazardous materials adds a new dimension to security landscape. The security forces are maintaining vigilance and employing advanced strategies to thwart any attempts at destabilization. And the Indian Navy is set to commission its newest stealth-guided missile destroyer, Imphal, at Naval Dockyard, Mumbai on December 26, 2023. Defence Minister Rajnath Singh will preside over the ceremony as the chief guest. The marks of formal entry of a third Visakhapatnam class destroyer crafted by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Mazgaon Dock Limited, Mumbai, into Navy's fleet. Let's take a break. We'll back with latest update. Currently, the industry is facing a lot of challenges as far as demand is concerned. Basically, the US markets has slowed down because of high inflation. So obviously, diamonds being a dream product, something which doesn't have a utility value or is seen as a luxury. So that obviously goes off your shopping list. That's the first item that will go off your shopping list, especially in recessionary trends. That lab-grown diamonds are not mined and they do away with the entire mining. So they save up on all the environmental damage that is associated with mining and of course, the mining cost, which is why they're even more affordable.
first people that is impacted by all these recessions are the artisans, are the people who work in this industry, right? But I think lab-grown diamond has allowed them to actually use their skills in the same product. This and more streaming on world's first news OTT, News 9+. Download now. तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। This is someone who is sitting inside our jails and is still very obviously and openly running and possibly the largest organized criminal operation in the country. स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में सोपू का एक्टिंग प्रेसिडेंट टाइप भी रहा है. He was a troublemaker, getting into fights with people, not coming to the class. As on GIT, it appears that Lawrence gang is the most important, the prominent gang. Gangs here in Punjab, they are intimidated. Today he is India's most dangerous gangster, and India's prisons are apparently no bar to how Bishnoi runs India's largest criminal empire. News is now content. Just stream it. Download the world's first news OTT, News 9+, ahead of the curve. Bangalore traffic is an example of something that has gone wrong with our system. We have more than 50 flyovers in Bangalore city. If flyover is a solution to traffic problem, Bangalore should not have traffic problem. According to TomTom Traffic Index 2022, Bangalore is ranked as the second worst city in the world when it comes to traffic. The speed limit at the ORR is 80 kilometers per hour, but our vehicle has only moved 10 kilometers per hour. What Bangalore needs is a surgery, but what we have been offered repeatedly are band-aids. Only on the world's first news OTT, News 9+, ahead of the curve. The following content may contain visuals that are disturbing, graphic, or sensitive in nature. Viewer discretion is advised. This material is intended for mature audiences and may not be suitable for all viewers. Please exercise caution while watching, and if you find such content distressing, we recommend discontinuing viewing. This disclaimer is provided to ensure awareness and to prioritize viewer well-being. Israel battled Hamas militants on Saturday to pursuit of its elusive goal of full control of northern Gaza after the UN Security Council appealed for more aid for Palestinian enclave, but stopped short of demanding a ceasefire. Doctors attend to wounded patients in a tent in Jabalia as the fighting in northern Gaza raged on Saturday. Residents reported persistent aerial bombardment and shelling from Israeli tanks, which they said had moved further into the town. It follows an appeal from the UN Security Council for more aid for the Palestinian enclave, though it stopped short of demanding a ceasefire. U.S. President Joe Biden spoke with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Saturday about the situation in Israel and Gaza. I had a long talk with Netanyahu today, and it's a private conversation. While leaving for Camp David, Biden told reporters he did not ask Netanyahu for a ceasefire. Israel's main ally has kept up its support while expressing concern over the growing casualty toll and humanitarian crisis in Gaza. Netanyahu's office said in a statement, the Israeli leader, quote, made clear that Israel will pursue the war until all of its objectives are fully met. At least 201 Palestinians have been killed over the past 24 hours, taking the death toll to over 20,000 during the 11-week conflict, the Palestinian Health Ministry said on Saturday.
Thousands more bodies are believed trapped under rubble. Hamas's armed wing said it had destroyed 5 Israeli tanks in the area, killing and injuring their crews after reusing 2 undetonated missiles launched earlier by Israel. Reuters could not independently verify the report. Israel said more than 140 of its soldiers have been killed since it launched its ground incursion in response to an October 7 rampage by Gaza's ruling Hamas militants. 1,200 people were killed and 240 hostages were taken back into the enclave. Hamas said on Saturday it had lost contact with a group it said was responsible for 5 of the Israeli hostages due to Israeli bombardment. More than 100 hostages are still believed to be in Gaza. And the Israeli army released a video that showed an extensive network of tunnels that were built by Hamas. The tunnel complex has electricity and blast doors inside it. The Israeli army are sending a dog squad with cameras to explore the tunnels. On the other hand, the death toll in Gaza is on rise with each passing day, and entire families were getting destroyed. As per a story reported in the Guardian, 70 members belonging to an extended family were killed in an Israeli military strike, as the UN officials. Among the dead was a veteran UN aid worker as well. The head of the UNDP said that a man named Issam al-Mughrabi, his wife and 5 children and dozens of other relatives were killed in bombing near the Gaza city. The statement from the UNDP read that the loss of Issam and his family has deeply affected us all, and that the UN and the civilians in Gaza were not a target. The UNDP statement urged for an immediate ceasefire and said that the war must end. And demonstrators in Tel Aviv hostages square persisted in urging the Israeli government to ensure the release of the remaining hostages. Simultaneously, a group convened a distinct rally against the Israeli government at Habima Square in the capital city. Despite the short distance between the two locations, numerous protesters actively participated in both demonstrations, reflecting the shared resonance of sentiments among the gatherings. I don't like the government because there was an investigation that our Prime Minister gave money to the Hamas terror movement, and that the money that he gave them was the money that allowed them to do what they did. So I don't like it. We need to make sure that Benjamin Netanyahu will go away. He makes more harm than good. And he betrayed the people. He absolutely traitor. So we want him to go. We've been protesting for a year now, and it's just getting worse. So it needs to be now. At the moment, I'm finding it quite hard not to totally despair. I've been holding strong for a long time and trying to think that good things can come for us in terms of hostages returning, and at the moment we are subjected to the most horrific psychological warfare by Hamas. I'm from a kibbutz that we still have over 30 hostages held in Gaza, and every time there's this week that there was a video that was people that I know my whole life. I'm extremely worried. I'm extremely worried about my dad, who is held hostage, from which we don't know anything about him for the last 9 or so weeks. We know he arrived alive in Gaza, but we don't know what is his condition now. And it's every day you wake up and you remember that it's the 7th of October did happen. And every day you learn new details and new horrific details about what happened. And you just try to keep busy.
do something that brings them back. Do something for those poor people that we love so much who are there. A Gabon-flagged vessel, MV Sai Baba, carrying 25 Indian crew member, has just survived a drone attack by Yemen's Houthi rebels. The Indian Navy reports that all crew members are safe. This incident is a part of the recent spat-off attack, with 2 vessels falling prey to Houthi drones, as reported by the US Central Command. According to the official statement, on December 23, Houthi rebels fired 2 anti-ship ballistic missiles into the southern Red Sea from their controlled areas in Yemen. No ships reported being impacted by these potentially catastrophic missiles. Meanwhile, Iranian Foreign Minister rejected US accusation that Iran is deeply involved in these attacks by Houthi rebels on Israel-linked commercial ships in Red Sea. He dismissed the allegations, asserting that the Houthis were acting independently. We frankly told the US side that they, the Yemen-based Houthis, made the decision according to their own position. We've never ordered them to do anything. Neither will we order them to stop taking action. For us, regional security is very important. We are not seeking to expand the scope of war. The solution to the problem is not to establish a so-called coalition in the Red Sea, but to stop the bloodshed of women, children and civilians in the Gaza Strip and the West Bank. And in a recent incident, a merchant vessel carrying a crew of 23, including an estimated 21 Indians, faced a suspected drone strike in the Arabian Sea off Gujarat coast. The US Department of Defense disclosed on Sunday that the aerial attack originated from Iran. According to a Pentagon spokesperson, the motor vessels Chem Pluto, Liberia-flagged Japanese-owned and Netherlands-operated chemical tanker was targeted around 10 a.m. local time in the Indian Ocean, 200 nautical miles from the coast of India. The strike was executed by a one-way attack drone launched from Iran. The Indian Navy sent a P-8 patrol aircraft and a warship to aid the Liberian flagship Chem Pluto, which began its journey with crude from Al Jubail, Saudi Arabia, on December 19. Moving to the next story, rising sea levels pose a grave threat to Nigerian coastal region, compelling over 80% of Aitoro's population in southwest to abandon their homes. For overnight decades, Aitoro flourished, drawing more than 30,000 residents and fostering thriving fishing, textile and shipbuilding industries. However, despite being originally situated several kilometers from the sea, the town has steadily succumbed to encroaching seawater over the past 20 years. In recent years, seawater invasion has become increasingly common, causing widespread property loss. I was on bed when the water came up. So around 3 o'clock in the midnight, and I just went, it was someone that even called me that water is already in my frontage. So when I just moved out, everywhere was full of water. So I have to rescue some of my stuff from there. Like 2 days, everything just go inside the sea, so we can't take anything from that building. The first thing you will notice is that the water will be coming up. It will be coming up, then followed by the wave. The wave will be increasing until you will no more come near it. Nobody will be able to come near it. More than 3/4 of this community has been taken away by the sea. More than 3/4. On the night of December 23, Santa Claus embarked on his annual journey from Arctic Circle to bring Christmas joy to children worldwide. In the chilly surroundings outside Santa's residence in Rovaniemi, Finland, families
gather to enjoy Christmas songs and say their farewells to Santa. Prior to boarding his sleigh, Santa delivered a heartfelt message. Stopp! Hur da? Nadi, ja. Ja? And now please watch News 9 Plus special documentary how Pakistan is training women to act as intelligence operatives and trap influential Indians. I recently received a friend request from Mahira Sharma. Now, we seem to have a lot of friends in common on social media, particularly from the military veterans community. But something about her didn't quite add up. So we decided to investigate. Now, honey traps as an espionage tool are nothing new. They've been around for centuries. But Pakistan's ISI, their spy agency, has been perfecting honey traps in the virtual space. Our story takes you inside Pakistan's honey trap machine.